नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो and assalamu alaikum. Sab bhaiyo, beno, janwaro, you're all very welcome to another episode, an amazing jam-packed episode of Brown Monday. Brown Monday are here, late as usual. Manas is trying to play the political game. बहुत clever है यार, मैं अभी देखा उसका यार मैसेज. क्या उसने बोला कहाँ था दक्ष? तू बोला था कहाँ बोला था? हाँ, glad to see I'm not the problem because we are late. Glad to see I'm not the problem. लेकिन you might not be the problem, like your partner in crime is the problem today. निधि पता नहीं कहाँ से आ रहा है यार. निधि तूने वो कहाँ तेरा वीडियो देखा तूने? Something you were hanging out of the car or something. क्या सीन चल रहा था यार? वो तू उसकी कॉपी तो नहीं कर रहा था जो tell me about Yes. it. Puneet Superstar. Yes. It's not copy. You can't copy the Lord. No, you can't copy it. You can only It's be like inspired. It's like a little. It's like a little homage. It's like a little homage. Yeah. No, my cousin, I laughed so much when I see that. Of course, guys, you're all very welcome. Indian Scouser is already in the building. He says, "Big up Brown Monday. Smash the likes on your way, people." Thank you very much. Yo, Brown Monday. Abhinav says, "Late, huh? Yeah, to hoti hai baat, yaar." Listen, tradition, always late. Keep the tradition going. We have to, yaar. We have to keep the tradition going. Yeah. Parampara, Pratishtha, Anusashan. We have to. अनुशासन नहीं बस अनुशासन नहीं है हाँ बस परंपरा प्रतिष्ठा. As always late for Baba. नहीं. I'm gonna defend Baba. नहीं मैं तो टाइम पे आ गया था भाई. Baba late नहीं था आज. Baba was. No. It's me. I was late. Yeah. Exactly. Laugh, Grizz must be boiling. Sun is out in the UK. Beta, sun तो है लेकिन I'm still cold, fasting and everything. You know what I mean, brother. You know what I mean. इसीलिए कोट पहना हुआ यार अंदर भी. Conservatory में no. So when you're in the conservatory, it's still very cold, yaar. Or also, yaar, heating, yaar, the gas and electric bills in UK is unbelievable, man. मैं तो कोशिश करता हूँ कि जैकेट ही पहना रहूँ यार हमेशा always. Honestly, yaar, I'm being honest. It's crazy. Yeah. But guys, Arsenal fan, let us take the 3 points in peace and love. देखते हैं यार, देखते हैं. Oh really? हाँ देखते हैं यार देखते हैं नहीं यार नहीं सोचेंगे The peace and love that you guys had all these last 3-4 years where you wanted City to save football, is that the peace and love you're talking about? यार save football यार We'll see. देखते हैं यार. Of course joining me is an amazing cast, only minus one person. Manus unfortunately is busy with some big shoots with Terry Phelan and there's a journalist, Irish journalist, something I can't remember his name now. I'm so sorry. Yeah. So ठीक है हम छोटे लोग वो बड़े लोग चलता है no problem. लेकिन I've got the best. Daksh कैसा है? A is for Arsenal. Good man, all good यार. सब भी बढ़िया चल रहा है. आउट इन लंदन अभी पूरा ईस्टर का माहौल है यहाँ पे. डबलिन में भी था, सो आई एम ऑन अ वेकेशन नाउ, बट ऑफ कोर्स आई विल मेक टाइम फॉर ब्राउन मंडे ऑब्वियसली. बहुत हम तो बोलेंगे वधिया. यू गोना से बधिया. Baba, your team and you are so I'm so thankful for Chelsea this season. I'm so thankful. Nidhi, अगर Chelsea ना होता तो हमारा क्या होता? I'm so thankful for Chelsea. I mean, Chelsea is like the drunk guy. Like you think you're drunk, but then you see the other guy puking and more drunk. Like you see the other guy puking and rolling in his own puke. So you're like, at least I'm talking shit. और फिर गटर में जाके गिर गए. वो है. So yeah. Baba is here. Baba is live. Baba, you know I love you, Baba. हाँ. मैं तो खुद कह रहा हूँ गटर में जाके गिर गए उल्टी करके. Like we are the ugly twins. We are the ugly twins of the Premier League this time. So Baba कैसे हो यार? Another eventful, another controversial. देखेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे, सवाल भी सुनेंगे आपका. लेकिन another eventful week in the life of a Chelsea fan.
हाँ मतलब ये सीजन तो कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब आई सी दिस सीजन एज अ विन। मतलब मेरे Absolute लिए तो win. एटलीस्ट मतलब भले ही टीम अच्छा नहीं कर रही हो भाई, कंटेंट बहुत दिया मेरी टीम ने। और कंसिस्टेंसी इस चीज में तो है कि कंटेंट मिल रहा है हर हफ्ते। मतलब देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी वीक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई मैं खुश हूँ। बट हाँ, फुटबॉलिंग पॉइंट से कुछ ज्यादा है नहीं बात करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर सीजन। देखते हैं, पूछते हैं। एंड ऑफ कोर्स जॉइनिंग अस अगेन। 8 महीने से सोच रहे हम ये कि अब टर्न होगा सीजन, अब टर्न होगा सीजन, खत्म हो गया। हम टर्न हो गए। Our हमारा season, our season has turned like milk, Baba. तो What फिर can we do? यार लेकिन सही मजा नहीं ले सकते यार, बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशन। मैं तो भाई बोल रहा हूँ, our season has turned like milk. That's what I'm saying. Otherwise I want to enjoy the Chelsea demise so much. um, Uh, Sadiq Bhai is joining us. Sadiq Bhai, Ramzan Mubarak. Hope you had a good opening fast. जी जी कैसे हो? ठीक ठीक, एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक है। अभी तो रोजा खोले तो जरा कुछ दुनिया हाँ नजर हाँ आनी हाँ शुरू हाँ हुई हाँ, है। दुनिया हाँ नजर आती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। आई एम लिटरली वेटिंग, सो ओवर 3 hours लेफ्ट फॉर मी, सो आप भाइयों की मदद चाहिए होगी, कीप मी गोइंग। If I collapse, then just keep talking. Ignore me. Just keep talking. शो चलना चाहिए, मेरी खैर है, शो चलना चाहिए। यू आर आस्किंग अ डॉक्टर टू इग्नोर अ कोलैप्स पर्सन। Oh shit! Of course. How can I ask Sadiq bhai to ignore? Guys, as you come in, oh my god, look, when doctor की बात हो रही है, I broke my ankle today. Hopefully, some good joke will today. यार कोई है, क्या करना चाहिए? If you broke your ankle, मैं तो बोलूँगा go and see the doctor. लेकिन हो कोई एग्जैक्टली। advice है? नहीं मतलब पहले जाके दिखाओ कि टूटा भी है कि ऐਵੇਂ ही लग रहा है टूट गया है। हाँ ऐसे ही लग रहा है यार, ब्रूज swollen होगा यार। Put some ice. um, वो मटर का पैकेट होता है ना, frozen peas. Yeah, just put the frozen peas, frozen मटर See, ला when your यार। ankle is damaged, no, jute doesn't help you. It's rice that helps you. Rest, ice, हाँ elevation, and compression. देख ले जूट से राइस चला गया यार। राइस राइस जाए यार, आर्सेनल, हमें राइस नहीं चाहिए। Guys, so much to talk about. I don't know where to start. I think there's only one place to start because the most relevant or important or I don't know, shocking news. Baba, was it a shock? The prodigal हाँ son is back. Mr. Chelsea back for an interim role. Is it हाँ confirmed that an interim role होगा? ये दो तीन सवाल करूंगा आपसे, लेकिन was it a shock to you? हाँ, शॉक तो था ही डेफिनेटली, बिकॉज जिस स्पीड से आ रही थी न्यूज, लग ही रहा था कि एनरिके का तो फाइनली कर दिया इन्होंने। एंड Mm. ही वुड बी मतलब हैविंग अ ट्रेनिंग सेशन इन कपल ऑफ डेज, और वुल्स के अगेंस्ट ही माइट नहीं ऑन द साइडलाइन, इतना तक हो गया था। बट ठीक है, मतलब अब तो जो भी अवेलेबल मैनेजर है उससे लिंक आ रहा है। मार्सेलो गयार्डो से भी लिंक आने लग गया, रिवर प्लेट का जो मैनेजर है, आज मैं पढ़ रहा था। वही वही। तो अब ये आराम से अपना टाइम लेंगे, सैम बट अलाटाइस का आ लैम्पार्ड। गया लिंक, सैम अलाटाइस का अभी बाकी है ना? नहीं नहीं, अभी अभी उतने बुरे दिन नहीं आए हमारे क्लब के, थैंकफुली। वी आर स्टिल एबल टू अट्रैक्ट सम ऑफ द टॉप मैनेजर्स। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर यू क्रिस भाई, अभी उतना डिमाइस नहीं हुआ है चेल्सी का। वी आर स्टिल एबल टू अट्रैक्ट सम गुड उम्मीद नेम्स है, टू। इसका मतलब है उम्मीद है हाँ, अभी। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट सीजन आप वो बोलेंगे यार क्यों चेल्सी यूरोप में नहीं है। देखिएगा। बट Grace हाँ bhai, Grace bhai, हाँ। Chelsea are on Tinder, not Ashley Madison. So they're not that desperate. सही सही हाँ। सही सही सही। बट लैम्पार्ड का तो था थोड़ा सा शॉकिंग। बट शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि क्या हुआ है ये। बट थोड़ा मैंने सोचा तो फिर मुझे लगा कि डाउन साइड ज्यादा कुछ है नहीं इसका। अपसाइड भी कुछ नहीं है, बट डाउन साइड भी कुछ है नहीं। रही बात जहां तक परमानेंट होने की, तो वो तो उसी केस में होगा इफ यू विन द चैंपियंस लीग, और वो होने नहीं वाला। तो वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, मतलब ही इज देयर टू मेक अस फिनिश ऑन अ हाई दिस सीजन। बस वही होगा, थोड़ा सा 10 मैच जो प्रीमियर लीग में बचे हैं, 4-5 जीत जाएंगे उसमें। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उतना शायद बुरी तरीके से नहीं आ रहे जितना पॉटर के अंडर आते हैं। बस यही सब चीजें वो इंश्योर करने हैं। बाकी तो मुझे ज्यादा उम्मीद है भी नहीं। थोड़े बहुत जो प्लेयर हैं जिनका डाउन है कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा सा अप हो जाए। और कुछ मतलब प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा, बस ये है कि लैम्पार्ड के अंडर खेले हुए हैं पहले भी। तो
वो थोड़ा सा बस जोर लगाएंगे लास्ट के ये जो लेग है सीजन के, बस और कुछ नहीं है, वाइब्स है बस, टैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है। मैं यही सोच रहा था, मैं यही बोल रहा था। मैं 90 मिनट्स पे जब खबर निकली थी मंडे, वी वर स्पीकिंग अबाउट इट। मैं वी हैड डैनियल चाइल्ड्स, चेल्सी गाय, सन ऑफ चेल्सी, आई डोंट नो, देखा सुना होगा उसका। He's very pro Lampard. तो उसको मैं थोड़ा सा ना छेड़ रहा था, ट्रोल कर रहा था, जैसे समझे somebody is trolling is somebody else is debating। तो मैं उसको बोल रहा था कि वही भी ऐसे बोल रहा था कि there's no downside। So मैं उससे क्वेश्चन कर रहा था कि how can you say there's no downside? You still got 10 games to go, 3 months left of the season. An organized setup, a structured setup would use these to the maximum in terms of player development, youngsters, sorting out the contracts. Instead, आप लोग opposite कर रहे हो। You are just getting him for the vibes. You need planning. You don't need vibes. Chelsea ऐसा club है that you need a structure now. Vibes will only, in my opinion, take you backwards. तुम बोल रहे थे ना कि there's no downside. The downside is, imagine players' contracts, because you got to remember, जब last time वहाँ पे था, he got sacked because the performance wasn't good. He got sacked because the football wasn't good. He got sacked because there was no progress in none of the young players, so the ownership thought. So instead of planning for the future and making sure the plans, you are just wasting 2-3 months, because the new person, whoever the new person is, has to start again, instead of putting someone in the same mindset of that and sort of setting the precedent for the new guy. आप लोग सिर्फ he's going to do what he wants, how he wants। जो player आपके confused हुए थे system के, with the Potter system, had no idea, no structure, he's going to rip that book up, put his own 2-month manual in. Players will be confused for 2-3 months, then confused again. Not everybody is a scientist. Some of these players are absolutely thick, getting 3-4 different sort of instructions and ways of playing। मुझे तो कोई upside नहीं लगता इसमें। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा दूसरा पहलू भी बताता हूँ। अब ओनर्स हैं, उनका आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। वो पहली बार आए हैं यूरोप में, ठीक है, फुटबॉल उनके लिए एकदम नया है, उनको कुछ भी नहीं पता फुटबॉल के बारे में। उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया टूकल को सैक करने का, और फिर वो अपना बंदा लेके आते हैं जिसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो बैकफायर कर गया बुरी तरीके से उनके मुंह पे। अब वो उसको बैक करना चाह रहे थे, 3-4 साल में उसका रिजल्ट दिखता नहीं था, 3-4 साल का टाइम फैंस के पास, और वो एक न्यूज आई थी कि जो अप्रोर था उससे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। तो उनको समझ आ गया कि ये टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर, अगर आपने गलत मैनेजरियल अपॉइंटमेंट कर ली तो। अब अगर आप टाइम ले रहे हैं सही मैनेजरियल अपॉइंटमेंट करने में, तो मतलब मेरे को इसमें कुछ गलती लगती नहीं है, बिकॉज ओनर्स हैव द राइट कि वो अपने आप देख के एक पूरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस को फॉलो करें जो उनको समझ आ रहा है बंदा, बिकॉज दे डोंट वांट टू मेक द सेम मिस्टेक। एक बंदा जो था आपका पहले मैनेजर, वो अच्छा मैनेजर था लेकिन वो आपके विजन से अलाइन नहीं था। दूसरा बंदा था जो आपके विजन से अलाइन नहीं था, विजन से अलाइन था बट वो अच्छा मैनेजर नहीं था। तो अगर इसको ये डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा एक आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म पेन है फॉर लॉन्ग टर्म गेन, बट इट्स नॉट लाइक कि हम we are interviewing managers like Sam Allardyce, Roy Hodgson या इस ब्रैकेट के मैनेजर्स को हम कर रहे हैं। We are taking our time, और हम नागल्समैन, लुइस एनरिके, जोसे has been also put in the mix, इन सब मैनेजर्स पे दिमाग लगा के काम किया जा रहा है। तो these decisions are not taken like that, और इसमें मैं ओनर्स को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता because they have taken the bold decision। अगर उनको एक यस मैन चाहिए होता है या उनको लगता है कि यार हमारी ईगो पे बात आ चुकी है, हमारे बंदे को कैसे बैक नहीं कर रहा है फैन बेस, नहीं बंदा तो यही है, तो उसको सैक ही नहीं करता पॉटर को, तो क्या ही फर्क पड़ रहा होता। तो दे थिंक कि टाइम हमको लगेगा, और यूरोप इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये सब क्वेश्चन में तब होता जब हम ये बोल रहे होते हैं यार लुइस हेनरी के तो बिना यूरोप के आएगा ही नहीं, नागल्समैन तो बिना यूरोप के आएगा ही नहीं। ये मैनेजर्स आने को तैयार है तभी तो बात कर रहे हैं, ये भी लोग जानते हैं कि यूरोप नहीं आने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, और गलती से लैम्पार्ड ने कुछ अच्छा कर दिया और जिता दिया तो पॉजिटिव ही है ना। Let's go to some of the other brothers। भाइयों क्या ख्याल है, क्या सोच है आपकी? पहले क्या सोच थी कि हाँ
जैसे बाबा ने explain किया, there's no upside, there's no downside. It's just to feel good for the end of this until the end of the season. Daksh, तेरा क्या Hmm. ख्याल है इसमें? So apart from like the initial banter and the memes, you sacked Lampard for Tuchel, who you sacked for Potter, who you sacked for Lampard again. It's like time is a flat circle kind of thing. So apart from the initial jokes and everything, whatever Baba is saying was also my thought. Um, that this is literally you can't go really wrong with this. The owners protect themselves from immediate criticism that listen, you've made a bad choice. So you give them a fan favorite who they can connect with, like Baba was also saying that this is somebody who I can finally connect with when I watch him. Right? The fans, if not the entire fan base, at least half the fan base wants to see Lampard manage Chelsea. So जो boost थी at the end of the last game वो काफी सारी कम हो जाएंगी चाहे कैसा भी रिजल्ट है राइट द बार इज एनीवेज लो जितना पॉटर ने खेला था यू कांट रियली डू मच वर्स देन पॉटर बाबा को स्टेटिस्टिक पता होगा एक पॉइंट पे 4 wins in 17 ऐसे कुछ था जो भी था राइट can't get much worse than it. And at the end of it, it's just 10 games and 11-12 if you take the Champions League. Um, and he's right, exhaustive process है मेरे हिसाब से एक और चीज I think Nidhi bhai also says this that the owners do not have any margin of error to make a mistake with managerial appointments again. Transfers में excitement थी that yes we have these high potential players but some of them are firing some of them are misfiring. पैसों का इतना ज्यादा खर्चा हो गया उस पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है उल्टा मैनेजर जो अपॉइंट किया दैट दे आल्सो हैव टू सैक एंड दिस इज देयर technically fourth manager this season if you include the interim वाला Bruno Saldor, right? तो now इसके बाद they can't really go they can't really make any wrong choices because then it's catastrophe. FFP देख लो, financially देख लो, प्लेयर्स देख लो कि प्लेयर नहीं आना चाहेगा ऐसे सिस्टम में जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है कोई और मैनेजर नहीं आना चाहेगा आई ऑल्सो थिंक इफ यू डिले दिस टिल द समर ना काफी और सारे मैनेजर्स फ्री अप होंगे फॉर एग्जाम्पल देर आर टॉक्स लाइक कार्लो एंचेलोटी माइट बी कमिंग इन एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर at Real Madrid. So you have another option to look at. There can also be कि Luis Enrique ने इतना impress कर दिया your immediate choice Julian Nagelsmann is not your immediate choice anymore. So I think summer तक push करने तक you can reevaluate the contenders you have. You can also open the door for many other contenders who might be there. Maybe an Ancelotti, maybe somebody else who might decide to quit his job in another league, and you really, really rate them. So for me, the owners are just giving themselves some time. एक sort of PR move है which the fans can get also on board with. और कुछ नहीं होगा लोग cheer करेंगे and he'll keep things simple, right? जो आप कह रहे हो कि yes, these some players do not require इतने सारे system confuse हो जाएंगे but I expect Frank to keep it like very very simple. विंगर को विंगर पे खिलाएगा, स्ट्राइकर को स्ट्राइकर पे खिलाएगा, लेफ्ट बैक ही खेलेगा, सेंटर बैक में नहीं आ जाएगा. So it's going to be very simple. Just play football, go out there, have fun. Those kinds of philosophy. It's not going to be too bad for Lampard, I think. सादिक भाई, मतलब जब ये न्यूज़ आई थी दैट टाइम द फर्स्ट पर्सन आई मैसेज वाज बाबा हिमसेल्फ मतलब ये सच है ये हो रहा है एंड देन इनिशियल थॉट ये था कि क्या कर रहे हैं बट देन आफ्टर थिंकिंग ओवर इट हम लोग दोनों ने आई वाज एग्जैक्टली हम लोग दोनों का सेम ओपिनियन था कि इट्स मोर ऑफ अ लैटरल मूव इट्स लाइक अ क्लासिक जॉर्डन हेंडरसन साइडवेज पास आपने कर दिया सेफ एले जॉर्डन हेंडरसन ते लग गया एले गल किथे हो रही है ते जॉर्डन हेंडरसन ते आ गया एले or a bit Scott like McTominay. Manchester United. Yeah, हाँ a bit like McTominay पे आओ ना a bit like जॉर्डन Manchester हेंडरसन का United. Yeah, a bit like Manchester United title challenge, no, Sadiq bhai. एग्जैक्ट अरे नहीं वो तो नीचे कर गया दिया, था ना बोल दिया, कर दिया अरे साइड में पास. निधि भाई वो तो नीचे गया था वो साइड में थोड़ी वो तो नीचे गया था साइड में ही है, साइड में ही है. पिछले 10 साल से वही देख रहे हैं. अरे 10 साल से तो नीचे चले गए भाई साइड की तो बात ही हाँ नहीं है भाई. ना, नीचे है Good बता रहे हैं. बस नोट कर लिया कि सादिक डन द फर्स्ट शॉट ठीक है नो प्रॉब्लम नोट कर लिया कभी कभी मौका मिलता है कि हमारे को हाँ, पिछले 10 साल में हाँ ठोक ठोक अच्छा नहीं आई मीन ऑन अ सीरियस नोट कमिंग बैक टू इट कि तो इट्स मोस्टली मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा इससे मतलब अभी जो चल रहा है बल्कि थोड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि कभी कभी ना इतना सारा नेगेटिविटी हो गया था इवन इन द फैंस कि समटाइम्स जस्ट having good vibe मतलब सब बोल रहे हैं it will be vibes but sometimes just having a good mood around the fan base and the team itself is also good. It's not
that bad. वो it just gives more clarity to the players also कि ठीक है, fans at least support कर रहे हैं, fans are after the manager, and as Daksh said कि Lampard plays a very simplistic football, straight 4-3-3, तो players को ही पता है यार ये रोल है, ये करना है, ऐसे खेलना है. Sometimes मेकिंग टू कॉम्प्लेक्स, अगर आप फुटबॉल को बहुत कॉम्प्लेक्स भी कर दो ना, तो वहां भी दिक्कत आ जाती है. लेकिन इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया सिचुएशन. एंड बाबा फील फ्री टू इंटरप्ट मी एंड बाइट बैक. फॉर एग्जांपल अगर लैम्पार्ड अच्छा मैनेज करता है लास्ट 10 games, we can Grace bhai, look, it's a very very slim chance of winning the Champions League. Like, you can't say there's no chance of winning the Champions League. Di Matteo done it, other managers have done it. There is no chance of winning the Champions League. हाँ, yeah, no, you can't say no chance. You can say there's very little chance. ठीक है? Grace bhai. Nidhi, let me just quickly finish. फिर बोलें. Yeah. So, for example, life works in mysterious ways. ठीक है? Who thought Lampard is going to be sitting under a new manager, Todd Bowley, after the previous manager was sacked, after sacking the previous manager who replaced Lampard, £600 million later, new ownership later, Lampard, a year ago when Roman Abramovich was there. Who would have thought that? So, ye bhi bolenge na, Droba, you would have, 100% Baba, you would have said, no chance. Grisba, you're talking about, there's no chance of what you, the scenario that you've just read out to me, yaar, kya ho gaya, yaar? Roza khola hai? रोजा लगा हुआ है, क्या होगा भाई, क्या बोल रहा है? So you can't say there's no chance of winning Champions League. मैं ये कह रहा हूँ कि they put themselves in a predicament because we know, even as outsiders, you will know more than us कि Lampard is Mr. Chelsea. अगर Lampard ने कुछ अच्छा कर लिया ना, bring the good vibes back, slowly the match-going fan at Stamford Bridge worships Lampard. उन्होंने अपने आप पे फजूल प्रेशर डाल दिया है, in my humble opinion, because I'm sure you don't want him long term. I'm sure you understand that the short term fix is fine. लेकिन you're in a catch-22 situation. आप तो सोचते हो कि यार, at least he will do good. If he does good, the fan mood will swing. I guarantee you it will swing. And they will be in a very difficult position because you don't just sack Lampard after he's done well. First time round, there was so much मजबूर होकर ना उन्होंने sack किया उसको. The results were that bad, the mood was that bad. He's Mr. Chelsea. If they just, I think they possibly created a fazul situation for themselves. They didn't have to do this. That's just my thinking. Nidhi. Okay, Grace bhai, before Baba answers this, I'll just say this. Listen, this is like, you went out drunk for a party with your friends, right? And you've pissed your तो wife. drunk की बात कर रहे हैं हमेशा. Drunk. हाँ, अरे, that's because you pissed your wife off, okay? And then what happens is you try to cook her a beautiful plate of truffles. You fuck that up. Then you try to cook a really nice plate of, I don't know, some exotic dish, and you fucked it up. And में आप बोलते हो कि listen, if this time I fuck it up, before I prep for my next meal, which is going to be really delicious and really eloquent, right? मैं बहुत तैयारी करके बनाऊंगा. लेकिन उसके पहले, just because she is hungry, let me cook a nice meal of pasta, which I cannot fuck it up. Because it's just boiling water. It's just like boiling water and add butter and some ketchup to it. Right? I think that's what Chelsea have done. Yeah, because, I get it. Right? And Lampard, I you know what? I don't like it when, मैंने तो वीडियो भी बनाया था कि मैनेजर्स जब सैक होते हैं इतनी जल्दी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है. Right? And I don't like it, when managers are sacked off so soon. I think that this is more of like, placating the fans till the end of the season. Right? I don't think, welcome बोल रहा हूँ मैं, right? If you look at Chelsea fans, अगर वो 10 मैच बचे उसमें से वो 6 हार जाते हैं या 6 ड्रॉ होते हैं, 6 नहीं जीतते हैं, तो उतना बड़ा कोई सरप्राइज होने वाला है. But they don't want another manager जिसके ऊपर they turn on again, and they don't want a very negative atmosphere.
And don't get me wrong, I want Frank Lampard to do well. I think he is a promising manager. I just think he took on the wrong jobs at the wrong time. मैंने एवर्टन के टाइम पे भी बोला था, I think he should have gone to Norwich because spotlight the spotlight would have shown a little less brighter at a non Premier League club. So I think this is more of To application. stabilizing. Application till the end of the season, and maybe Nagelsmann or Luis Enrique have told them, hang on till the end of the season. हो So सकता है, it's देखते हैं, that kind of a देखते हैं. thing. It's that kind of a thing. I want to ask Baba's opinion on one couple of more things. Sachin sends in a super chat, says Grizz, so Jude is coming. हाँ वो आएगा यार, वो जरूर आएगा, जरूर आएगा. थोड़ा सा सब्र करें. बाबा, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स के सिचुएशन है, प्लीज अगर आप कोई हमें इनसाइट दे सके कि व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप. वी नो कि जो उसका कोई लोग कहते हैं इसका बेटा था मेसन माउंट, he will come into the reckoning again. उसका कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थोड़ा नाजुक था. I know Liverpool wanted him, and I believe we've met him and his agent, and I believe we have agreed a deal with Mason if he doesn't extend with Chelsea. अभी उसका क्या सीन तेरे ख्याल में होगा? Will that change? And any other changes? Kovacic, Kante, so many other guys, youngsters out on loan. What will that change the landscape? Because this is important as well. The next 2-3 months, you have to decide these things as a club. How much influence Lampard will play, basically? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लैम्पार्ड का काम ये नहीं होगा कि कौन रुकता है कौन नहीं रुकता है. आई डोंट थिंक सो उसके हाथ में होगा टू मेक दोस डिसीजंस बिकॉज ही वोंट बी हियर लॉन्ग टर्म. बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि वो यहाँ पे होगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 months और वो मेसन माउंट से एक बार भी बात नहीं करेगा कि तू छोड़ना क्यों चाह रहा है भाई. Impossible. ये तो मैं नहीं मान सकता. मतलब ठीक है, हो सकता है मेसन माउंट ऑलरेडी अग्री कर लिया, उसने मन भी बना लिया कि मुझे लिवरपूल जाना है, लेकिन लैम्पार्ड उससे डिस्कस भी नहीं करे कि क्या मतलब तेरा सीन है भाई, क्यों तू छोड़ना चाह रहा है, क्या है क्या नहीं है. और वो हो सकता है भाई उसका तब मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ही माइट कंसिडर एक्सटेंडिंग जो भी टर्म्स उसको ऑफर करी जा रही है उसमें. तो बस मेरे को माउंट के केस में लग रहा है. बाकी आई डोंट थिंक सो कि किसी भी प्लेयर के एक्सटेंशन में या किसी भी प्लेयर की सेल में लैम्पार्ड का कोई भी से होने वाला है समर में. माउंट का आई बिलीव, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये माउंट की जो सिचुएशन है उसको भी थोड़ा सा सॉफन करने के लिए, क्योंकि ओनर्स का शायद वो बॉन्ड नहीं है जो लैम्पार्ड का है माउंट के साथ. तो ऑब्वियसली मतलब लैम्पार्ड आएगा तो माउंट खेलेगा ही, और वो माउंट से डिस्कस तो करेगा ही कि भाई तू जा रहा है जा, लेकिन एटलीस्ट बता तो क्या है क्या सीन नहीं है. तो आई थिंक सो वो कॉन्वर्सेशन होगी और उसमें हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल जाए चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और चेल्सी को भी डिसीजन लेना है बिकॉज जाओ फीलिक्स आ रहा है, एनकुंकू आ रहा है. मतलब जाओ फीलिक्स को अगर परमानेंट करना है या क्या आपका सीन है, माउंट को एक्सटेंड करना है, क्योंकि 3 प्लेयर तो नहीं खेल सकते सेम तरीके के एक सिस्टम. बाबा ये नेगेटिव नहीं हो सकता. The way he plays Felix will be different from the way Potter would have played Felix, the way another manager would have played Felix. Felix will these players of आजकल के जो players है ना, they're very sensitive. They're all about themselves. So imagine for the next 2-3 months, Lampard doesn't fancy Felix. It's just, I think it's just complicating matters. Maybe उसको क्योंकि Todd Bowley or the owners won't. मेरे लिए तो मैं तो वैसे भी कह रहा हूँ, मेरे लिए Felix has not done enough to warrant a permanent move. मैं तो मतलब लोग पागल हो रखे हैं Felix के पीछे कि अरे और क्या मस्त बंदा आया है, ट्रिक्स एंड फ्लिक्स वाला, थोड़ा सा टेक्निकल एबिलिटी क्रिएटिविटी प्रोवाइड किया. भाई एक गेम तो Felix ने अपने हाथ मतलब ऐसा सिंगल हैंडेडली को जिता दिया या कुछ हो गया. मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ. हाँ, लेकिन जैसे एक बहुत ही मरी हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड में ब्रूनो फर्नांडिस आ गया था जनवरी में और उसने कैरी कर लिया था उनको पूरा एंड ऑफ द सीजन तक. वैसा तो नहीं किया ना फिलिक्स ने कुछ. मैनचेस्टर यूनाइटेड भी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, बट ब्रूनो आया जनवरी में. बहुत प्लेयर्स होते हैं ऐसे. लुइस सुआरेज आया था लिवरपूल में एक सीजन जनवरी में, उसने वो कैरी किया था फिर पूरा. मतलब ऐसे होती है साइनिंग्स. पापिस सीसे आपको याद, न्यूकासल में डेम्बाबा और पापिस सीसे की जो पार्टनरशिप हुई थी,
which eventually made them finish fifth. Yeah. तो मेरे हिसाब से तो फिलिक्स ने ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक कि मैं बोलूं अरे यार इसको तो वी कांट मिस आउट ऑन हिम, और ऐसा भी नहीं है कि उसका प्राइस टैग इज अराउंड 30-40 मिलियन, Yeah. उसको रोकने के लिए 80-90 मिलियन चाहिए होगा. I remember बाबा ने I think आप मतीस के और यूनिस भाई के साथ I think you were doing a stream where you said it's a lose-lose situation because he extended his contract before he came to Chelsea on loan, right? So it's not like you're going to get him on cheap. उसकी price भी ज़्यादा है. If he balls out for Chelsea, you'll have to pay the full price, which is a very हाँ, big price. And if he's not playing well anyway, तो यार मतलब तो वैसे फायदा ही ही हाँ. नहीं. तो तो it's इसका क्या, लेकिन इसका तो फिर इसका क्या मतलब था फिर? नहीं नहीं, वो डेस्पिरेशन थी, एक चाहिए था अटैकर, नहीं नहीं समझ आ रहा था, अवेलेबल था, लेके आ गए. मैं कह रहा हूँ ना, नाइव है ना ओनर्स बहुत ज्यादा, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है. And this is what I'm saying. This time इनको भी नहीं समझ आया. ये लैम्पार्ड की जो सिलेक्शन है ना, मुझे तो लगता है लैम्पार्ड ओबामेयांग को खिलाएगा स्ट्राइकर. मैं चांसेस मजाक है, नहीं कर रहा हूँ. चांसेस है. प्रीमियर लीग में तो उसको, वहां चैंपियंस लीग में तो हैवर्ट्स या फिलिक्स में से किसी को खिलाना पड़ेगा, बिकॉज माउंट विल बी इन द टीम, ही विल प्ले अ प्रॉपर 4-3-3. और मुद्रिक ही वांटेड इन एवर्टन, तो मुद्रिक विल प्ले, स्टर्लिंग विल प्ले ऑन द राइट, और बीच में आई बिलीव ही विल प्ले फिलिक्स या हैवर्ट्स, वो रोटेट करेगा उन दोनों में से. बट ओबामेयांग को वो खिलाएगा प्रीमियर लीग में, चैंपियंस लीग में तो नहीं है उसके लिए. तो मतलब अभी तो क्या है ना कि हमको ये चाहिए कि थोड़ा सा शिप स्टडी हो जाए बस, और कुछ भी नहीं है. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं अगेन नथिंग अगेंस्ट जाओ फेलिक्स, बट मेरे हिसाब से उसने मेरे लिए इतना नहीं किया, मतलब कि 80-90 मिलियन हम दें उसके लिए, और फिर एनकुंकू भी आ रहा है, फिर वी हैव दैट सिलेक्शन हेडेक. इससे अच्छा माउंट को आप वो कर लो ना यार परमानेंट, मतलब रादर देन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन फिलिक्स, आप माउंट को करो एक्सटेंड. और क्योंकि, और अगर आप देख रहे हो नागल्समैन जैसा मैनेजर लाने के लिए, तो भी उसके सिस्टम में माउंट फिट होता है. आप लुइस एनरिके लाने का सोच रहे हो, तो भी उसके सिस्टम में माउंट फिट होता है. तो माउंट तो दोनों मैनेजर्स के सिस्टम में फिट होता है ना, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, मैनेजर किसको लाते हैं. यार जो भी है, इट्स इंटरेस्टिंग. अगेन वही आपकी बात ना कि इट्स ग्रेट कंटेंट. Chelsea are providing great content for everyone. Great entertainment, great content, and long may it continue. Anne says, huge fan of the Big Six, and it's great to see a South version of it. Love it. बहुत मेहरबानी यार. Thank you very much. देखते हैं यार, क्या you are playing Wolves away from home? क्या ख्याल है? क्या कोई prediction चलती है? बड़ा पोएटिक जस्टिस हो रहा है. टूकल जब आए थे, मैं तो, और लैम्पार्ड को सैक किया गया था, तो टूकल का पहला गेम था वुल्व्स, व्हिच लैम्पार्ड वुड हैव मैनेज्ड. तो मतलब अब लैम्पार्ड आए हैं वेयर टूकल काइंड ऑफ लेफ्ट ऑफ फ्रॉम, या पॉटर लेफ्ट ऑफ, और वो फिर लेके जाएंगे हमको चैंपियंस लीग में आगे. तो टूकल ने उस टाइम किया, तो काफी पोएटिक चीजें हो रही. बट अब प्रेडिक्शन, नो प्रेडिक्शंस, मतलब पता ही नहीं है कि क्या टीम खेलेगी, कैसा होगा. Wolves although are a difficult team, but this season they have been मतलब kind of fodder only. So I would go for a 1-1 draw. Please beat Wolves, Ova. Please beat. ट्राई करेंगे भैया, मैं तो ड्रॉ के लिए जाऊंगा. 1-1 draw ओए पहला. अच्छा. हाँ, दक्ष because prediction. मतलब वो मैं मैजिकली एक्सपेक्ट नहीं करता कि लैम्पार्ड के आते ही ये प्लेयर्स फिनिशिंग करना सीख जाएंगे. लिवरपूल वाला मैच इतना गंदा था, लेकिन हमको कम से कम उसमें 2 या 3 गोल. spoken about that by the way, Chris bhai. नहीं नहीं, कोई वजह होती है यार, नहीं, कोई नहीं। टाइमिंग होती है यार. नहीं, हमको कम से कम 2 गोल मारने चाहिए. मकसद नहीं है ना उस मैच का, कोई मकसद नहीं है बात करने का. there's no वो मैं- वही you know वही लैम्पार्ड की सिलेक्शन, like his selection of manager, फायदा ही नहीं है. is no upside, no downside to that game. It's just लिवरपूल वाला जो मैच था उसमें हमको कम से कम 2 गोल्स मारने चाहिए, 2 गोल्स मिनिमम, जो हमको चांसेस मिले थे. बट उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ बहुत ही बेकार खेले. तो फिनिशिंग तो एक प्रॉब्लम रहा ही है, और जो मुझे लगता नहीं है कि मैजिकली एक मैच में ठीक हो जाएगा. इवन जो हम चैंपियंस लीग जीते थे दिस सीजन, उस सीजन में हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे अपनी इजी चांसेस. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चांसेस बन भी गए तो फिनिश नहीं हो पाएंगे. तो ड्रॉ के साथ मेरा प्रेडिक्शन है. Daksh, draw as well. I feel it's going to be a popular prediction. I actually think it's going to be 1-0 Wolves यार. मेरे को लग रहा है Wolves.
Yeah, I think Lampard ke under you will start, you will play good football. There'll be encouraging signs, but one of those sucker punch goals ठीक from है a Podence, from a Kangan, whatever, Wang, निधि sorry, not Kangan. more misery for Chelsea या Lampard new manager bounce I'm going for a Chelsea win. I want a Chelsea win. I want a Chelsea win. I ये want क्या Wolves to get. सोच है मुझे समझाएं कुछ context इसका क्या है what I are you want Wolves to get relegated. अच्छा कोई खास दुश्मनी Yes, because they sang sacked in the morning for Klopp. I want I want Wolves to go down, and I hope they can sing it for their own manager. सादिक भाई अरे मैं तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, बट आई सीरियसली गो फॉर अ चेल्सी विन, 2-0 विन. Nice. मुझे भी लग रहा है Chelsea 1-0 like more than one goal is very mushkil for them as we know बाबा प्लीज यार. I know आप मैनेजर अब नहीं हो. Like आपको एक ही मैच मैनेज करने दिया, बट हरा दो यार Wolves. oh यार ये भी side story है ना Frank Lampard meets Diego Costa again Yes, ओए so कॉस्टा many इंजर्ड नहीं है, हाँ I ये भी think हो it सकता might है be. वो शायद हाँ आउट है ना. कॉस्टा तो I सीजन think के लिए he's out हो out. गया. like and I just realized Sadik is wearing the Wolves training top as well so you should be supporting Wolves नहीं Sadik ये लेकर्स का है. हाँ कलर तो सेम है ना यार चलता है we have to go to the big game massive game huge game all for Arsenal none of that applies for Liverpool in my opinion पूछ रहे थे लोग कि won't the atmosphere be amazing Liverpool will be up for it this is Anfield जब Chelsea आती है Manchester City आती है Manchester United आती है A the position we're in and the mood we're in and the form we're in and B I think top 4 is gone and C I think the crowd will be 50-50 who they want to win the league so Daksh गिरीश जी भाई जी आपसे एक सवाल है मेरा. एक आपने अपन 3-4 वीक पहले जब कर रहे थे ऑलमोस्ट अ मंथ अगो तो आपने कहा था कि अगर यूनाइटेड को हरा दिया हमने तो टॉप 4 मतलब वो होगा कि एक वो मोमेंटम बन जाएगा. आपने ये कहा था मेरे को याद है और यूनाइटेड को हराया गया आपने तो बिल्कुल ही मतलब लताड़ ही दिया. व्हाट हैज गॉन रॉन्ग उसके बाद से? Bournemouth मतलब ने ना Bournemouth result ने ना सब कुछ खत्म कर दिया मेरा Yeah. inside नहीं outside बट वही मेरा सवाल है. बोर्नमथ मैच में क्या हुआ? लाइक एक इतना कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देने के बाद व्हाट हैपेंड टू द टीम? मतलब do you guys know आपको we क्या haven't लगता है? do you guys know we haven't played the same team since Since the लगता है 7th. क्या it's the same story it's the same story guys once we've established कि इस team की legs खत्म है इस team की energy खत्म है इस team's the players are past their sell by date it's the same thing you can't expect consistency the only consistency about Liverpool is the inconsistency अभी बहुत chances है हमारे बात करेंगे ना maybe some of you even predict a Liverpool win अभी chances है we might turn up and beat the leaders that will be Manchester United Man City and Liverpool and Arsenal and home within a matter of yeah 5-6 weeks or whatever Man City sorry was before but you get what I mean Yeah. so we are just like even the worst. I was going to say we are just like the rest of the Premier League teams, apart from Man City and Liverpool of the last 5-6 years. दूसरी टीमें तो सब inconsistent है. Chelsea, Manchester United, Arsenal, all been inconsistent. Spurs. We're part of the pack now. We're no longer up there, and we have to fix it. And the only way we can fix it, we tried to fix it with the same squad. उसने कोशिश की, different partnerships, different this, different that, but he's realized finally that he can only do it in the transfer market. Like in that Yes. तेरे लिए तो this is for me if I was an Arsenal fan I'd be so nervous I wouldn't be able to sleep until Sunday because for me this is the match apart from the Man City one. This is the game that I believe will decide the title. I believe if you win the title. I believe if you don't win, even if you draw, I still believe Man City will win the title. Itna nazuk hai. And you're going to your probably, apart from City away, your worst away ground. Yeah.
आई थिंक पूरे सीजन की कंटेक्स्ट में दिस इज वन ऑफ द 3 games in the run in which I'm really scared of. Um, Probably the most, if I'm, and again I'm not just being very contextual because यही अगला गेम है, बिकॉज हमने एनफील्ड पे पता नहीं 2012-13 से लीग में नहीं जीते हैं, मतलब 10-11 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, एंड जब भी हारे हैं बहुत तगड़ी पिटाई हुई है हमारी. नाउ इस बार ऑफ कोर्स रन अच्छा है, फॉर्म अच्छा है, प्लेयर्स आर इन ग्रेट फॉर्म, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग. Literally it is, this team has no superstar, या पूरी टीम ही is the star, everyone is contributing. 5 people have more than 5 goals and 5 goals this time. हमारे front 4 are 10 plus goals and assists. Finally Gabriel Jesus is back, उसने लास्ट गेम में ब्रेस मारा था. तो कॉन्फिडेंस के तो सारे इंडिकेटर्स हैं. The problem is that the last team that was this in form and this confident which came to Anfield ना, उन्होंने 7 गोल की पिटाई खाई थी. ठीक है, एंड आई डोंट वांट उस लेवल की कंप्लेसेंसी फॉलिंग इनटू आर्सेनल अगेन. क्योंकि यार देखो, आई मीन इतनी बार हम कहते हैं कि एनफील्ड कांट बी अ टैक्टिक. क्लॉप ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वी नीड एनफील्ड बट इट्स नॉट द ओनली थिंग वी शुड बी रिलाइंग ऑन, राइट? तो एनफील्ड कांट बी अ टैक्टिक बट इट इज डेफिनेटली अ फैक्टर यार, जो हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट्स वन ऑफ द टफेस्ट ग्राउंड्स टू गो टू फॉर अ रीजन. नाउ इस सीजन इंकरेजिंग बात यह है ग्रिस भाई, दैट इतने सारे डिफिकल्ट टाइम्स में भी वी पुल्ड आउट अ रिजल्ट नाउ, बट दोज वर अगेंस्ट बोर्नमथ एंड विला, बट रिजल्ट थे यार. वी वर लूजिंग टिल द 95th मिनट, हमने गोल मार दिया. कभी जॉर्जिनियो गोल मार रहा है, कभी रीस नेल्सन गोल मार रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कास्ट इज कमिंग अप एट द राइट टाइम. किसने उम्मीद करी थी रीस नेल्सन आपका गेम विनर हो गया, या जॉर्जिनो इतनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मारेगा? मैंने तो कभी नहीं देखी थी जॉर्जिनो ने इतनी लंबा, मतलब इतना. आई हैव नेवर सीन जॉर्जिनो take a shot from that distance, never mind anything else. Never mind a pass that distance. यार वो 5 yard pass कैसे खेल सकते? Yeah. 5 yard pass. Never mind a pass. Never mind a shot. हाँ. Yeah, I remember वो गेम चल रहा था, मैं बाबा के स्ट्रीम पे था, बाबा was like, oh, जॉर्जिनो ने गोल मार दिया. मैंने तो कभी नहीं देखा जॉर्जिनो को, and that's the same thing man. um, कॉन्फिडेंट हूँ बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ. ऑफ कोर्स थोड़ी हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं. सलीबा माइट नॉट बी फिट, ऑल्दो आर्टेटा कुछ माइंड गेम्स खेल रहा है दैट वन ऑफ देम माइट बी फिट. आई हैव अ फीलिंग इट्स एडी. Saliba might not be fit. He is going to be a big miss, especially against your front line यार. आपकी फ्रंट लाइन में साला अगर खेलेगा, नूनेस खेलेगा, डियाज आई डोंट थिंक ही इज गोना प्ले, दैट्स व्हाट क्लॉप सेड. बट फिर भी यार, डिएगो जोटा हमेशा हमारे अगेंस्ट ही कम्स अलाइव. He's in a 14 game scoreless streak. So what a better time to beat your whipping boys again, right? तो यार है, थोड़े बहुत डर हैं बट थोड़े बहुत स्ट्रेंथ भी है. मिडफील्ड आपका काफ़ी शेकी लगता है. मिडफील्ड इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट. वी हैव अ वेरी वेल फंक्शनिंग वेल ऑयल्ड मिडफील्ड जिसमें क्रिएटिविटी भी है, सॉलिडिटी ऑफ डिफेंस भी है, एंड मिडफील्ड गोल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड असिस्ट भी कर रहा है. आपका राइट साइड इज वेरी वीक. वहाँ पे गैब्रियल मार्टिनेली टेयरिंग इट अप, वेदर चाहे जो गोमेस खेले या फिर अलेक्जेंडर आर्नल्ड खेले. मेरे को याद है लास्ट गेम में, आई डोंट रिमेंबर विच गेम इट वाज, बट क्लॉप वाज फ्रस्ट्रेटेड बाय रॉबर्टसन आल्सो. कभी वो फालतू में प्रेस कर रहा था. सिमिकास डिडंट लुक कन्विंसिंग अगेंस्ट चेल्सी एज वेल. साका इज प्लेइंग ऑन दैट साइड. इट्स गोइंग टू बी अबाउट कौन सी टीम दूसरी टीम की वीकनेस एक्सप्लॉइट करती है, एंड अभी इस मोमेंट पे मुझे लगता है वी हैव मोर स्ट्रेंथ्स टू एक्सप्लॉइट लिवरपूल्स वीकनेसेस. बट होम पे है, एनफील्ड पे है. लास्ट टाइम जब स्टेक्स इतनी हाई थी, आई वुड से मैन सिटी के अगेंस्ट हम खेले थे, एंड उसमें हमने 2-3 बहुत स्टूपिड गोल्स कंसीड कर दिए थे विच टुक द गेम अवे फ्रॉम अस कंप्लीटली. तो वही बात है यार, आई एम लिटिल कॉन्फिडेंट इन दीज बॉयज कि ये लोग कर सकते हैं. वी आर वेरी वेल केपेबल, बिकॉज इस सीजन जितने भी ग्राउंड्स पे हम बिल्कुल नहीं जीते थे, चाहे स्पर्स हो, स्पर्स अवे हो, चाहे I think United के against भी we played really really well, unlucky to not come up with the result. But away पे भी ना हमारी performances have been really really good. So I am cautiously optimistic about this game. I think we might actually end up winning. Sadiq bhai, as a neutral, are you a neutral first and foremost? Manchester की तरफ से क्या ख्याल है ये देखो, in this game? Because this is a triple jeopardy for you guys. Man City, Arsenal, and then Liverpool. देखो, when it comes to me, I would, जैसे भी निधि कह रहा था बाबा को हरा दो बुल्स को, I would like हरा दो आर्सेनल को यार. For me, I come from the era of peak Arsenal United वाला
हाँ बिल्कुल ये मैं मिड सोच रहा हूँ 90s. ना, but So then I you could can't. ask लेकिन you want to laugh at Liverpool as well. No, I don't want to laugh at Liverpool as such because Nidhi knows my wife is a Liverpool fan. 50-50 हो गया, 50-50 हो गया, तो At उधर जरा least, थोड़ा सा. at least. at least हाँ. 50 50-50 हो गया. तो मतलब when it comes to Arsenal there is no love lost. मतलब so I would be like I'm hoping कि मतलब अच्छे से इनका भी आप स्वागत करें एनफील्ड पे, इनकी खातिरदारी करें, खातिर तवाज़ो करें इनकी अच्छे थोड़ा से. सा humble करें, हाँ वही बात है ना, थोड़ा सा humble. मतलब इनको पता लगे कि ठीक है, दे आर आल्सो स्टिल पार्ट ऑफ द पैक एज यू सेड. तो खैर गोइंग बैक टू इट, के देखो आर्सेनल के लिए मुश्किल तो होगा बिकॉज पता है लिवरपूल का नहीं पता कि कौन सा लिवरपूल टर्न अप करे उस दिन. मोर देन आपको ये तो पता है आर्सेनल विल कम विद दैट वही क्लासिक आर्टेटा का गेम प्लान, जिनचेंको टक इन कर रहा है, मिडफील्ड में नंबर दे रहा है, सारा टैक्टिकल वो. You don't know which Liverpool might turn up. If Liverpool wakes up on the right side of the bed that day, ओए होए भाई वो तो फिर मतलब धागे खोल देंगे. होए होए, तो you क्या can't. बात है. If we turn up, if we wake up on the वही right वाली side बात of the है. bed, वही बात ना. ओए होए होए, क्या बात है Because वैसे, the thing क्या in this बात game है. is not which Arsenal will turn up, it's which Liverpool will turn up. And Liverpool has been highly unpredictable this season. And for some reason, they have turned up against teams who have been flying high at that moment. अजीब बात है. मतलब हाँ, अभी आप बोल रहे थे कि वो चेल्सी वाले गेम की बात नहीं करें, ऑब्वियसली नहीं करेंगे बिकॉज मी एंड निधि went through a whole watch along together of that game. और so we saw how bad it was. But again, Chelsea is not a high flying team at this moment, and Liverpool also did not just turn up. लेकिन जो भी टीम अच्छे मोमेंटम में एनफील्ड आई है, yeah, even when you guys went to St James's Park earlier in the season, you beat Newcastle when Newcastle was pretty good, and still they are very good. मतलब वो उस वक्त वो अपने एक हाई पे स्टार्ट हुए थे चलना. तो वो वाली बात है कि लिवरपूल हैज शोन अप अगेंस्ट टीम्स हु आर प्लेइंग गुड, बारिंग दैट चैंपियंस लीग वाला वो, बट देन दैट इज रियल मैड्रिड. उसके बारे में आप क्या ही बात करें. तो आई फील है तो ये ट्रिकी फिक्चर, मतलब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं कि आर्सेनल इज जस्ट गोइंग टू गो इनटू एनफील्ड एंड विन No इट और chance, वो. no chance. ना ना ना. Straightforward की तो कोई chance ही नहीं है. Before I get the Liverpool perspective, Baba, let's see, Baba's there. Baba, are you there? Baba, what's the chances? How are you seeing this game again? Pretty neutral. या कोई है side? मतलब मुझे तो नहीं, मेरे को तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं कोई भी ये मैं जीते. कह रहा हूँ ना. हाँ, हाँ. मैं तो कोई ऐसा सच फर्क पड़ नहीं रहा है टेबल में तो. बट आई फील कि अगर लिवरपूल वैसा खेली जैसा चेल्सी अगेंस्ट खेली थी तो आर्सेनल के लिए बहुत कंफर्टेबल विन हो सकती है. 3-4 भी हो सकती है. बहुत embarrassing हो सकती है. I हाँ. 100% agree. हाँ, तो वो आई थिंक they have to make sure, but I don't think so कि Liverpool will have a problem with Arsenal winning the title. They would have a problem with City winning the title. वो वाली बात है. लेकिन एक इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर आर्सेनल टाइटल जीत जाती है तो क्लॉप एंड आर्टेटा will have same number of Premier League titles to them. बहुत तूने बोला ना कि थोड़ी सी फ्लिप साइड है, बहुत बड़ी फ्लिप साइड है. This is why I flipped. First I wanted Arsenal to win all the time. लेकिन जब सोचा ना कि हाँ यार, कभी-कभी गार्डन में बैठता हूँ ना तो सोचता हूँ लाइफ. मतलब और वही जब वाली मैंने बात सोचा हो कि ना जाती है. क्लब्स लेगेसी और आर्सेनल फैंस इन माय डीएम्स एंड मैसेजेस एंड मैंने तो कहा वो वाली यार बात है, और आपको पता है सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है, वो वाली चीज है. तो कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं ना. हाँ, कॉन्टेक्स्ट तो है ही नहीं है. कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वो दैट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. तो आई थिंक अगर वो कुछ है तो मतलब मैनेजर के लिए खेल लें, प्लेयर्स तो खेल लें, दे टर्न अप तो टर्न अप, वरना मतलब आई डोंट सी लिवरपूल विनिंग और इवन टेकिंग अ ड्रॉ. मतलब एक वही वाली बात है कि आर्सेनल का बिल्कुल ही खराब दिन हो इन फ्रंट ऑफ द गोल की चांस बनाए जा रहे हैं, बट आर्सेनल इज नॉट चेल्सी. वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने चांसेस. और एक बात ये है कि गोल स्कोरिंग बर्डन हैज बीन शेयर्ड. सब जैसे दक्षिण का पूरी टीम ही स्टार है, सब भी अच्छा खेलता है, तो मुश्किल है. ऑन द अदर हैंड लिवरपूल का आप देखो तो कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो अभी आपको लगे कि हाँ ये अच्छा खेल रहा है या ये ही इज बीन कंसिस्टेंट जो अपने दम पे मैच निकाल ले. तो प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, तो आई डोंट सी हाउ लिवरपूल कैन विन. वो वाली बात है, बट दे कैन. एनफील्ड है, वो आप नहीं कर सकते उसको. बट अगेन 70-30 इन फेवर ऑफ आर्सेनल. निधि, couple of things. कोई उम्मीद है
That's the first thing. दूसरी क्वेश्चन सवाल है ये है कि अगर उम्मीद है, is it because the return of Thiago Alcantara? अच्छा आ गया क्या Because थियागो? because looks like he will. I think he will be thrown straight into the team. Just my opinion. Would you throw him straight back into the team, or What agar, of if you do or you don't, what do you do with the front line? And name me your team, basically. what option do Virgil we have, Virgil भी Chris? वापस है. Virgil भी वापस आ जाएगा. So I think Diaz will be part of the squad. I don't think he will start. What option do we have, Chris? If Thiago is available, we have to throw him back in the team. Oye. Option क्या है हमारे पास? Right, right. And I've said this on my watch along. I have, officially, like Jordan Henderson, Grizz. I don't feel nice in saying this, but I've officially given up on Jordan Henderson Only Jordan Henderson. I've given because up on. other I've play, given up on. I've given up on three. no, no, बोलूं? more. But No, हम no, लोग three midfield की बात, given up on. No, no, but हम लोग more तो midfield की है. बात कर रहे हैं ना. लेकिन जो give up, full give up. If they don't play for Liverpool again, I won't be unhappy. Joel Matip, हाँ, Fabinho, and Jordan Henderson. हाँ, but उसमें से जोएल मैटिप स्टार्टर नहीं है ना, ग्रिस भाई, हाँ, ठीक है. है Henderson ना. shouldn't be a starter as well, technically. I believe so, but whatever, right? So for coming to the Thiago conversation, he has to play if he's fit, right? Look, it's all or nothing versus Arsenal. You throw the kitchen sink at them and see what happens. We blew it, right? I mean, honestly, City against Harna was not that big of a problem, right? ये सीजन में सिटी के अगेंस्ट हारना फाइन. यू लॉस्ट अगेंस्ट बर्नमथ, दैट वाज अ बिग बिग प्रॉब्लम. चेल्सी के साथ भी हार गए. टॉप फोर बहुत पहले, लाइक व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट बर्नमथ, मैंने तभी बोल दिया था कि टॉप फोर खत्म हो चुका है. अ लॉट ऑफ पीपल वर वेरी अपसेट कि यार आप मतलब ऑप्टिमिस्टिक क्यों नहीं हो और यू आर गिविंग अप ऑन द टीम. आई एम नॉट गिविंग अप ऑन द टीम, आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन द सीजन, राइट. आई आई डोंट थिंक टॉप फोर का कोई भी चांस है. But see, it's not, honestly, Grace, a lot of people, and I'll answer this honestly. बहुत लोग पूछते हैं कि चेल्सी जीतेगा या आर्सेनल जीत जाता या सिटी जीत जाता. जहां तक टाइटल की बात है ना, इफ लिवरपूल डोंट विन, चूल्हे में जाए यार, आई डोंट केयर. सही बात है. या if लिवरपूल डोंट विन, चूल्हे में जाए यार, आई डोंट केयर हु विंस द टाइटल. वो कॉन्वर्सेशंस जो होंगे कि आर्टेटा का सेम है, इसका सेम है, यार बाय दैट लॉजिक अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, यार मतलब ऐसे तो फिर आप बहुत सारे हिस्टोरिकल मैनेजर्स को रोबर्टो डी मेटेओ से कंपेयर कर दोगे क्योंकि एक ही चैंपियंस लीग है. सही बात है. ठीक है, लेकिन वही बात ना कॉन्टेक्स्ट. जो हम बोल रहे थे कि there's no हाँ, context. सोशल मीडिया पे कोई context नहीं चलता. मैंने सोशल मीडिया को सीरियसली लेना ही बंद कर दिया है. और मैं ऐसा मानता हूं कि मोस्ट पीपल शुड स्टॉप टेकिंग सोशल मीडिया सीरियसली एट ऑल. आप उसमें ना फेवरेट बियर पूछ लो, फेवरेट सॉन्ग पूछ लो, फेवरेट मूवी पूछ लो, उससे ज्यादा उसमें भी लड़ाई हो रेलेवेंट. जाएगी भैया. अरे मैं वही यार, कह रहा हूँ. बाबा बाबा एक बार मैंने बोल दिया था कि रसमलाई इज द गोटेड मिठाई, उसमें लोग गाली देने लग गए कि तू कभी कलकत्ता नहीं आया. साला मैं कलकत्ता 150 बार गया हूँ भाई, मेरा घर रांची में, मतलब कोलकाता से बगल में. बट ठीक है, चल तेरे को लगता होगा तो लगता होगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया, आई डोंट केयर. if people compare Klopp and Arteta, then ठीक है, कंपेयर करने दो, राइट. माय पॉइंट इज दिस, राइट. दिस सीजन 10 मैच बचे हैं, बस जस्ट प्ले फॉर प्राइड, जस्ट Pride. प्ले फॉर प्राइड. और यही pride है ना जो I think might give Arsenal a problem. Because जो हो जाए ना, you look, I don't think we have any chance. But I can't be a hypocrite. I can't say Chelsea have got a chance of winning the Champions League and then say Liverpool haven't got a chance for the top four. So both come chances, top four, okay? ठीक है? Lekin we have massive pride to play for. And if the world's eyes are going to be on this game, if the world's players that we want to sign are going to be on this game, eyes are going to be on this game, तो थोड़ा सा दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ, we are still something.
We still have fight. We still have कुछ तो कुछ है ना हमारे में. We beat Man City, we beat Napoli, Manchester United, Ajax, all in the same season, and then Arsenal. So we do have something. We're not finished. So this is what I think. I think we will give it a game. Karthik says, appreciate the support. He says Liverpool did turn up at the Emirates. We just handled them well. We are definitely not getting trashed. Is he talking about from Arsenal point of view? I Yeah, think so, Arsenal. Yeah. He's saying we, so of course. Arsenal. I was at the Arsenal Liverpool game, and I'm telling you now, we were very unlucky to lose that. Very unlucky. Couple of dodgy decisions. One, the camera wasn't there for VAR. One was a dodgy penalty, and the Diaz injury changed the game. The Luis Diaz injury at before halftime changed the game. So we gave them a very, very hard game. Ibi sends in a super chat and says, if Klopp don't let us, Arsenal, win on Sunday, then I won't be inviting Klopp for iftari on Monday. I make a good chicken biryani. Grey stream lads. Yeah, don't invite Klopp. Mujhe to invite kar lena yaar. Message kar mujhe kahan hai. I'm a massive fan of, actually not chicken biryani, I'm a massive fan of lamb biryani. लेकिन ठीक है तेरी चिकन को भी ट्राई कर लेंगे कोई If I can brag, नुकसान वाली बात नहीं. हाँ चलो ठीक है. You are the master chef. Go on, brag master if I chef. can brag, Chris bhai, master roti chhod ke, like I can cook a cracking meal. I'm not even kidding. आना पड़ेगा भैया फिर आपके घर पे. हाँ मैं भी आना पड़ेगा यार कुछ. डन कर. Not kidding यार. मेरा pepper chicken तो unbeatable है. Sorry, I'm bragging. I know I'm bragging. But मेरा pepper chicken. बाबा बताना यार कोई बताना रिपोर्ट बताना मुझे यार. यार ग्रेस भाई पे रहम करो, उनकी इफ्तारी में भी टाइम है इतने. लेकिन I'm getting more reward when it's like this. Yeah. ये I'm भी showing सही है. more reward. I'm getting more. बोलो. ये भी सही है. सादिक भाई तेरी टीम से आते हैं यार. मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन साइन कर वे भाई, साइन कर वे. No. यूरोपा लीग इस वीक है या नेक्स्ट वीक है? नहीं इसी वीक है वो, मतलब 13 तारीख को, थर्सडे. Wait, so you have tomorrow. You have who? एवर्टन अर्ली किक away. होम है. ठीक है वो भी. मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी अवे खेलती भी है? आई डोंट रिमेंबर द लास्ट अरे भाई अवे न्यूकासल अवे गए थे, 2-0 पिटे थे. हाँ उसके अलावा उससे पहले एनफील्ड पिटे थे. होम कह रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे खेलती है क्या? नहीं उससे पहले एनफील्ड पिटे थे. उससे पहले हाँ कप कॉम्पिटिशंस में वी हैव बीन लकी दिस सीजन. all home fix every All game. home fixtures. If Yeah. you're a ठीक है season सादिक भाई. I appreciate सादिक भाई because at least he admits it. Admits it. Lekin Everton home early kickoff. Europa League remind करना. Sporting Seville. Grizz. जी. Do you want Everton to get relegated? Because I don't. I do 100%. You sure? Yeah, पक्की बात है 100%. Especially they got Sean Dyche in charge. ओए होए. बट वो राइवलरी किससे रही है आपकी लीग में? मतलब as an Indian fan, Rivalry क्या rivalry यार? Grizz bhai, as an Indian fan, It's like as an Indian fan, like a guy who loves Liverpool living in India, and you know when I went to Liverpool, I have very fond memories of my interactions with Everton fans. And again, I'm sorry, like you guys are more in touch, but I may be a little off tune here. समझ गया. I don't want Everton to get relegated. ओए निधि ये कभी ना बोलना. Wolves को करा दो ना. Wolves को करा दो. हरामजादों ने गाड़ रहा था. Everton. I'm probably more than you, but I still don't understand the local pride because I'm from London. So I still don't understand the exact. Not understand. I do understand because I've been supporting so long. Like, I still don't have the same feeling and passion जो locals में होती है. Like, I can't explain it. Honestly, they are stinky club. और इतने उनके ratty behaviors of fans है ना. Honestly, मेरा sample size आपसे छोटा है, but मैं सैंडन में beer पी रहा था, and Everton fans like they treated me very well. Yeah, I know it's more of a मैं anecdotal examples दे रहा हूँ. तू वही कहानी ना तू होश में था? मैं बिल्कुल होश में था. पहली beer.
आई पहली डाउट भी आई इट, थी। आई डाउट इट, तू होश में था। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, डाउट है। वही तेरा एनालॉजी ना कि तुम होश में नहीं था नहीं, मैं होश में कंपेयर टू था। देम। वुल्व्स, वुल्व्स और छोटे थे नहीं मेरे लिए। यार, एवर्टन, एवर्टन हैज टू गो डाउन, हैज टू गो डाउन, इनफ, इनफ, स्पेशली आफ्टर सोन डाइच अपॉइंटमेंट। खत्म उसको करो यार, एवर्टन को। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चलते हैं यार। योर सीजन इज स्टिल इन द बैलेंस, वेदर इट्स गोना बी अ huge success, medium success, or die a dog's death. आई थिंक मीडियम सक्सेस के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं इस What वक्त। is medium success? आई वुड से टॉप 4 और जो लीग कप जीते हैं और एफए कप का मतलब फाइनल, क्योंकि यूरोपा में आगे गए नहीं गए वो इट्स अ वेरी, क्या बोलते हैं, बिकॉज सेविया प्लेज द, मतलब सेविया लिव्स टू प्ले इन द यूरोपा लीग हाँ एक हाँ तरीके हाँ से। हाँ। तो इस, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि कैसेमीरो को ला लीगा से हमने बुलाया ही नहीं है वापस, वो यूरोपा के ही मैचेस खेल रहा है और वो सारी ला लीगा टीमें खेल रहा है वन आफ्टर द अदर। तो आधा सीजन तो उसने ला लीगा का खेला है। तो after a while that takes its toll on it. I mean it takes a toll on your team एक तरीके से, क्योंकि इतने मैचेस हैं, क्योंकि अभी भी यूनाइटेड इज देयर इन 3 कॉम्पिटिशंस। अगर आप सेविया से जीत जाते हो, क्योंकि सेविया का फॉर्म एक्चुअली हैज बीन वेरी पुअर दिस सीजन, वो रेलिगेशन जोन से 2 या 3 पॉइंट ऊपर ही है। तो अगर आप जीत जाते हो इट विल जस्ट प्रोलॉन्ग, मतलब और गेम्स ऐड हो जाएंगे आपके इसमें। इट्स नॉट दैट आई वुड माइंड दैट, अच्छा है आगे जाएंगे Mm-hmm. टूर्नामेंट, एक और ट्रॉफी का चांस बनेगा, लेकिन इट्स जस्ट टेकिंग इट्स टोल ऑन द टीम राइट नाउ। ऐसा दिख रहा है कि प्लेयर्स ना अब मतलब थक गए, वो परेशान हो गए कि यार अब सीजन खत्म कब होगा ये। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप के बाद से देखो, यूनाइटेड हैज बीन द ओनली टीम विच हैज प्लेड एवरी थर्ड डे। हमारा हर डबल गेम वीक हुआ है, या तो कप गेम है या लीग गेम है, कप गेम है लीग गेम है। तो इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग हो गया है सबके ऊपर, टीम के ऊपर भी, फैन बेस के ऊपर भी। आप जब जीत रहे थे तो ठीक है, जब आप जीतते हो तो इट कीप्स यू मूविंग, लेकिन आपको पता है आप सारा टाइम नहीं जीतते रहोगे। थोड़े से मैचेस बीच में, जैसे अभी एक रन आया ये 3-4 मैचेस का, इसमें एनफील्ड का इतना बुरा रिजल्ट हो गया, न्यूकासल का रिजल्ट हो गया, हाँ बीच में हमने यूरोपा का गेम निकाल लिया, लेकिन देन इट स्टार्ट्स गेटिंग अ बिट टैक्सिंग। आपको फिर डर लगने लगता है कि यार ये हफ्ता अच्छा गुजरेगा बुरा गुजरेगा, और बाय द टाइम वो एक बुरा मैच गुजरता है, अगला मैच आपके सर पे होता है। तो उस तरीके से थोड़ा सा टैक्सिंग हो गया, लेकिन अगेन मतलब मीडियम सक्सेस वुड बी कि आप यूरोपा एक स्टेज और आगे चले जाओ। एफए कप का सेमीफाइनल अगर आपने ब्राइटन को हरा दिया, तो फाइनल में तो ऑब्वियसली मैन सिटी हाई फ्लाइंग, उसमें तो कोई उम्मीद नहीं होगी, विल जस्ट गो इन विद वाइब्स कि जीत गए तो जीत गए, ऐसा वरना कैसा, ऐसा कैसा, क्यों क्यों सादिक भाई, वाई? यार आपको पता है सिटी जिस फॉर्म में है और जो यूनाइटेड की टीम है, इवन अगर आप टीम को कंपेयर भी करो तो कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त दोनों टीम्स का। हाँ आप बट मैच सादिक, निकाल लो गिवन डे, वो एक अलग बात है। but but Sadiq bhai, take it from me. City is not in the form that he used to be. Take it from No, me. no, they're not in the form that they used to be, but compared to what Manchester United is right now, अगर आप देखो हमारी टीम में कैसीमीरो नहीं होता, हमारी मिडफील्ड खुल जाती है। रैशफोर्ड का बुरा दिन जाता है, वी स्कोर नथिंग। चांस क्रिएट भी हो रहे होते हैं तो नथिंग इज गेटिंग फिनिश्ड। पहले तो चांस ही नहीं क्रिएट हो रहे होते हैं। अगर एरन वैन बिसाक, अगर एक तेज विंगर खिला दिया, डिएगो डालो खुल जाता है, फर्स्ट हाफ में आपकी हालत खराब हो जाती है, सेकंड हाफ में वैन बिसाका अवेलेबल हुआ तो आता है। तो बहुत शेकी टीम है। दिस टीम नीड्स 3-4 मोर पीसेस इन द समर, जिसके बाद आई कुड बी मोर कॉन्फिडेंट। एक तो गोलकीपर हमारा डेविड डेगिया, लेजेंड ऑफ द क्लब नो डाउट, लेकिन जो सिस्टम हम खेल रहे हैं, प्ले फ्रॉम द बैक, एटलीस्ट द गोलकीपर नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट। अगर आप मैच टेक्निक टैक्टिकली देखो ना, तो बहुत जगह आपको लगता है कि यार अगर डेगिया की जगह एक डिसेंट बॉल प्लेइंग कीपर होता ना, तो हम इस चांस पे सामने वाली टीम को खोल देते। वो एक बॉल सही प्ले करता तो हम खोल देते, और वो आपको नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपको। आप जीत But जाओ, Sadiq, I say we end up third, we win the remaining 2 trophies, I will be over the moon। हाँ लेकिन हाँ। क्या मैं आज ये बैठ के बोल सकता हूँ कि हाँ हम ये कर सकते हैं? नहीं। देन आई वुड बी लाइंग टू यू गाइस कि हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर ही देंगे। Nidhi, I but think it's a Sadiq fair. bhai, I think it's a fair assessment. He's right. but yeah, yeah, but I also think, Grizz bhai, that United this season, like keeping my bias aside, I think United bounced back well under Eric Ten Hag. Like if you look at their loss against Newcastle, like
फॉर एग्जांपल जब वो अभी वो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जीते, ठीक है, वो मैच 1-1-0 था, मगर यूनाइटेड वर द डोमिनेंट फोर्स। जब वो 7-0 जीत हारे थे, उसके बाद जो मैच किया बेटिस यूरोपा वाला लीग में, बेटिस वाला, दे 4-1। वर द डोमिनेंट फोर्स, राइट? पता है तो निधि, आई थिंक अगर एक मैं एक बॉक्सिंग की एनालॉजी यूज करूं, आप यूनाइटेड, पता वो बॉक्सर है जो स्टार्ट अच्छा करता है, 2-3 अच्छे पंचेस मारता है, फिर एक जोर का मुक्का खाता है काउंटर पे, लेकिन वो खाने के बाद वो दोबारा 2-3 बॉक्सेस मारता है, लेकिन क्या होता है, वो फिर अपना पिछला जो मुक्का खाया होता है ना उसको भूल जाता है एंड पुट्स हिज गार्ड डाउन अगेन, फिर एक और पड़ता है उसको, और वो मुक्का किस टाइम पे पड़ता है वो हमें भी नहीं पता, और वो आपको अगर राउंड के एंड पे पड़ गया या राउंड के मिडिल में पड़ गया, नॉकडाउन हो गया ना, देन यू हैव टू कैरी आउट 3 मिनट्स, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। यार मैं तो दुआ करता हूँ नॉकआउट हो जाए मैन यूनाइटेड completely. Tomorrow is again one of those games के यार एवर्टन जीतता तो chances surviving. Man United जीतेगा तो I'm gonna whenever Manchester United wins I get upset. Just natural instinct होते हैं. Hopefully Seville, they're having an awful time in the league. Hopefully they do something in the Europa. I think you're going to beat them in the Europa. Next अरे round will यूरोप be interesting. नहीं Next भाई, round, यूरोपा में दे हैव बीन फ्लाइंग, हाँ 2-0, नहीं 3-2, नहीं 3-0, पता नहीं। लीग में अपने लीग में league they में haven't. La Liga they've been awful. They sacked their manager as well recently. Like I think Sporting and Juve in the next round will be awkward. Brighton and Man City to win the FA Cup looks awkward. Awkward, yeah. It could be just league. Hopefully, just finish fourth. हाँ Two मतलब weeks, 2 weeks away, quadruple hype था. अभी अभी ट्रेबल हाइप है, लेकिन ग्रेस भाई टू बी हाँ अभी बीट मतलब मैं ट्रिपल हमेशा हाइप है. मैं मैंने हमेशा हंसता हूँ ना, जिस ट्रेबल के लिए हम लिवरपूल को चिढ़ाते थे, दिस टाइम वी आर होपिंग टू विन दैट ट्रेबल। you were What goes hoping around to win comes. it. What goes You around comes you around. you were hoping to win it a few years earlier also, but like you जो वो भी नहीं चाहते हैं वो मिलता नहीं है ना मामू. आज आज तो भाई निधि भाई फुल मोड में, मैं तो कह रहा हूँ टू बी तन्मय यार तू कहाँ रहा है यार? तन्मय कैसे says talk about the Lampard, the real goat. यार go on, आप हमसे भी reverse the लेट आ show. गए, आप हमसे भी लेट हो। हाँ यार क्या हो गया यार? तू तो original Asian निकला तू तो यार. But we must end the show now हाँ, because एक एक दो चीजें हम कर लेते हैं ना, वी स्टिल हैवंट स्पोकन अबाउट सिटी, ग्रेस भाई, जल्दी से क्या बोले उनके बारे में क्या बोले? This साउथहैम्पटन is कर why. सकते हैं। This is why. बाबा की बात ना. This is why I want City to win. They're irrelevant to me, यार. There no fans, no nothing, कुछ no. भाई Hello. भाई एफपीएल में कौन ना क्या what? हालैंड को डाल लेना वापस They will एफपीएल be में, listen, listen, सेकंड हाफ में listen, हैट्रिक Grace listen, मरवा bhai, देगा उससे। Grace bhai, Grace listen. bhai, Within 10 years, they will be like Chelsea. Owners gone, financial trouble, repercussions of that. Gone, finish. Back to Gillingham, back to Shrewsbury. Grace bhai, Grace bhai, You it's wish, like Chris this. भाई, you wish. नहीं नहीं, ये You नहीं wish. जाते यार, हम I'm तो telling यूएई you, वाले I'm देश telling जाएंगे। you. Oh यार ये आ गया sorry माफ यार. City fan है उसने बोला when I was looking for him he said I'm here. See, 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 Grace bhai, it's like this. मान लो आप ना एक देसी फैमिली आउटिंग पे बैठे, उस पे एवरीबॉडी इज ब्रैगिंग कि यार मेरा तो मतलब मेरे बेटे ने तो सीए कर लिया, राइट? द अदर गाइज लाइक अरे मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग कर लिया, मेरे बेटे ने तो ये कर लिया वो कर लिया, एंड देयर इज दिस वन गाय, right, whose family is not here, but you know he's done well, like he's settled abroad, he's got a lot of money. You don't mind him winning because none of his family is here, so nobody can pinch you over it. That वही is same है ना, Manchester. same है. Your Arsenal is whatever we say about them, they're an institution. सिटी Chelsea were बन रहा है। becoming an institution. आई थिंक Chelsea की बात तो हो रही है ना कि when I was in university, Abramovich had just just taken over, and there was just hundreds and hundreds of born again Chelsea fans all around me. So they ruined my university experience. That's why I hate Chelsea. Of course, that's the reason. Man United is natural hatred. Arsenal is just weird. I don't know. क्या rivalry क्या? I don't know. It's weird rivalry. इतनी animosity भी नहीं है. But
when you listen to the two fan bases, becomes toxic. But let's see. Let's see. But I think it's Man City has become an institution, if you I like think it or not. it's slowly on the way. institution, बाबा उस तक नहीं बनेगी जब तक चैंपियंस लीग नहीं वो जीतेगा. अब ये तो हमने बना रखा है ना एक हाँ, क्राइटेरिया. these are But actually every club right now wants to be a Man City, to be honest. नहीं बन तो रहे, बन तो रहे. Of course, City Bantara, you can't deny it. They Yeah. own the Premier League. आपको पता है City They own it. मतलब But मेरे नजर- institutions are not built over decades. Institutions are built over a number of decades. Number of मतलब- decades. फिरोज भाई मेरी नजर में ना इस वक्त मैन सिटी अपने उस स्टेज में है जो मिड 90s में यूनाइटेड थी ना, जिस स्टेज में अंडर सर एलेक्स दे वर. ठीक है, यूनाइटेड की एक हिस्ट्री थी 50s 60s वाली, बट देन दे हैड 2 decades ऑफ अ फेयरली बैरन स्पेल व्हेन लिवरपूल एंड Sadiq bhai, the way I look at it, you can't build an institution under one ownership because ownership on average, not average, like roughly can last a decade. So you can have the most amazing, rich owners, everything for a decade. Continuation, rebuilding, that for me, that's an institution that keeps going and going and going. लेकिन वो बन रहा है ना अभी फिरोज भाई, हमको हाँ अगले बन रहा 10 साल है देखना पड़ेगा. 100% बन रहा है. मतलब But ये मैं बोल रहा ना कि I think within 10 years they won't be the institution. अगर that आपको we याद हो 90s में यूनाइटेड को क्या बोला जाता था कि भाई बिकॉज ऑफ दिस प्रीमियर लीग यू हैव द मनी कमिंग इन, मीडिया राइट्स अलग किस्म से थे, अभी जैसे नहीं थे कि सबको बराबर मिल रहा पैसा. यूनाइटेड को ज्यादा मिलता था उस वक्त 90s में. तो उस वक्त आपको पता है कि दिस वाज द थिंग कोटेड फॉर यूनाइटेड आल्सो दैट यू आर ओनली एबल टू बाय योर सक्सेस एट दिस मोमेंट. हाँ बिल्कुल. But then over the next 20 years or so, under the tutelage of Sir Alex Ferguson, एक इंस्टीट्यूशन वो दोबारा से बन गया. लेकिन आपने फिर देखा कि जब वो गए और जब ओनरशिप के ऊपर बात आई और जब रॉन्ग पीपल गॉट एट द हेल्म ऑफ थिंग्स, लास्ट 10 years you have seen the decade and the rot settle in. हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ ना. लेकिन देखते हैं यार, लेट्स सी दिस वीकेंड क्या बनता है. लेट्स सी इफ हिस्ट्री इज मेड दिस वीकेंड वेयर Daksh's Arsenal come to Anfield confident, buoyant. Confident Like, नहीं. you have to, उसी से चार गोल no, कर you जाते have हैं. to be, you Please must be हरा दो. confident. You प्लीज must हरा दो be आर्सेनल को, confident. प्लीज हरा दो आर्सेनल को. You must be confident. You are flying high. You are playing magnificent Yeah. football. You have the best young forwards around: Martinelli, Saka, Odegaard, the best since playmaker since Ozil, coach of the year in Arteta, Gabriel and Saliba at the back, one-on-one monsters. Ben Saliba White, the and- best fullback. Come to Anfield and do something. Let's see यार. आ जाओ. For me it will be a spectacle. हमने predictions नहीं करी उस game की, by the way. For me it's going to be a 2-2, but it's going to be an entertaining 2-2. 2-2. ओए ये तो मेरा prediction था. हाँ, मेरे को लग रहा है 2-2 होगा. काफी इंटरेस्टिंग है. एंड वेरी फनीली दिस आर्सेनल टीम रिमाइंड्स मी ऑफ लिवरपूल फ्रॉम 4 years ago. फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ गाइल, फुल ऑफ लॉट ऑफ पनाश यार. बहुत बढ़िया टीम है. इट्स अ जॉय टू वॉच. If you are a football neutral, if you want to watch, I would personally recommend you watch Arsenal. It's a great team to watch. Otherwise, देखते हैं यार ग्रेस भाई क्या होता है Anfield पे. I am really looking forward to this game, and of course, best of luck to everyone on this panel जिनकी भी teams खेल रही हैं. बाबा आपका prediction 2-2 तो आर्सेनल फैन ने तो 2-2 कर दिया. 2-1 to Arsenal. सादिक भाई. दिल बोल रहा है 2-1 लिवरपूल, दिमाग बोल रहा है 2-1 आर्सेनल. तो ड्रॉ बोलना था. You went to the Result other आएगा. you went to the other extreme. रिजल्ट आएगा. ड्रॉ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा. Nidhi, surely. I don't predict Liverpool results. Depends on what kind of team we put out here. Chelsea against it was more of a white flag. Huh. Grace भाई, what's your team? What's your team? I think it's going to be Trent, Virgil van Dijk, Gomez, Robertson, Fabinho. Gomez, why? Sorry, no Konate Gomez. Konate. Konate, Fabinho, Elliott, Thiago, Nunes, Salah, Gakpo. Jota. No Jota. Jota मारता हमारे against. Gakpo. Gakpo, Salah, and Nunes. Ozan Kabak, yes, he played centre back. Hello, Nidhi बोल रहा है. Hello, वापस कर दे यार तू भी. I think low key since the World Cup, Gakpo has been your
perhaps your best attacker. He looks overall. good, yaar. He looks good. अच्छा लग रहा है because everyone else is playing so shit. ठीक है. He's not. I'm not his biggest fan, but he's done very well. I must give He's him okay. credit. He's okay. Listen, He's we have okay. to end the stream. बहुत हो गया यार. बहुत थक गया हूँ यार. बहुत भूख लगी है. दुआ करो कितना time रहता है? 2 hours. Just over 2 hours. Thank you very much, Baba. Thank you very much, Daksh, Thank Nidhi, you, Salib Chris Bhai. bhai. Always a pleasure. People in the chat, thank you very much. Please like and subscribe if you haven't on your way out. We will be back next week. Some of us will be happy, some of us will be sad, and some will be like Baba, just lateral movements like his club. That's us ठीक है as well, Rose bhai. मिलते हैं That's ब्रेक us के as well बाद this season. मिलके ब्रेक के बाद यार listen, let's just take some jabs while we can. Time वक्त का कोई पता नहीं होता.